बोलो बोलो। I am Dr. Tyagi, MSc PhD Botany, आ जाने के बाद MSc PhD Botany, MCA, MA English, Bhojpur lecturer in Khatoli, then principal in Mathura. Now I am teaching IAS PCSC students and doctor and NEET and NET students of. Today I am teaching you Mendel's law. Mendel was not a scientist. He was clergy in Brun church. He sowed the seeds in different gamla, and then we see the terms like we see homozygote when the genes are of two types, heterozygote when the genes are of different type, hybrid when a process made between two units, and in F1 generation is called hybrid. Genotype, the description of gene, and phenotype, the description of color, etc. First law of Mendel, known as law of dominance, and a term there is Punnett square. It is a graphical representation of the different genes and different zygotes, and we see the structure of pollen and pistil. Then we see the law of dominance. In this law, in the F1 generation, when a cross is made between tall and flower, capital TT, small t, and capital T from gametes, dwarf from small t. Then gametes are formed TT, capital TT, and small tt. In F1 generation, all are hybrid tall. It is known as law of dominance. The character which is dominant is called dominant, and which is not present in F1 generation is called latent. Hybrid tall and hybrid tall both are crossed. Then in F2 generation, TT and TT both are crossed. In F2 generation, pure tall and pure dwarf are formed. Hybrid tall and hybrid tall, pure tall is formed and dwarf is formed. 1:1 की रेशो बनती है. जीनोटाइपिक रेशो 1 pure type, 2 hybrid type, and 1 pure dwarf. Then we see the law of segregation or law of purity of gametes. Law of purity of gametes में we see that when F1 hybrid is crossed with the second cross, gametes TT, small t, then they are formed tall, and tall. All are formed tall type. And in the law of segregation, when we see that gametes T, small t, capital T, when capital T, small t, and capital T, small t are crossed, then tall plants are formed or dwarf flower plants are formed. In this ratio is called 1:1, and in test cross
A cross between an individual of a known genotype and recessive parent is called test cross. Is called test cross. We are looking test cross of different types. We see in back cross, a plant breeding back cross be performed a few times in order to increase the traits of that breed. For example, a cross plant is crossed with a variety with a wide variety in order to contain resistance. In this process, most good traits of the crop plant hybrid. The hybrid is therefore requestly have crossed with parents here plant to order to transport the good. The test cross. Now we see there are some characters of traits in Pisum sativum, that is dominant type are red, then violet, then inflated, then flower exile, then stem height. Recessive traits are wrinkled seed, green, while yellow seeds, constricted seeds, and there are found various plants. If you see the second law of independent assortment, it is very important. Independent assortment, first round yellow, RRYY, and small r small and small r small I small y wrinkled green are taken. Then gametes are formed RY small r small y, and in F1 generation round yellow capital R capital Y are formed. Capital R small r capital Y small y. If we see in the Punnett square, on the one side female gametes RY small y and small r, capital R and capital Y, small r and small y. And in male gametes you see RY small r capital Y, capital Y, small r small y. When we cross with both, then we see that there is a ratio of 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled green, and one wrinkled green is formed. We can check in the board that if RY is formed, then it is round yellow, it is round yellow, it is round yellow, it is round yellow. Here there are so many round yellow and round green. Round green contains capital R, capital Y, capital R, and the small wrinkled green is called small r, small y, capital R, small y. Now we see कितने हो गए भाई? 1 मिनट रही. This ratio 9:3:3:1 is called dihybrid ratio, and 1:3:1 ratio is called monohybrid ratio. We see बल्लो बैठ 10 मिनट पूरे हो जाए, 5 मिनट का था. हाँ
Now we see the chromosomal theory of inheritance. वंशागति का गुणसूत्रीय आधार थियोडोर बाबे ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मेंडेलियन के गुणसूत्र रेखीय क्रम में लगे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मेंडल के समय वैज्ञानिकों के जीव कोशिकाओं की रचना का बहुत कम समय ज्ञान था। उस समय उन्हें कारक कहा जाता था, परंतु 1965 में प्रकाशित हो चुका था और कई कारणों से 1900 तक यह कार्य जैसे डिवरीज, कोरेंस और जॉन शर्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति बताई गई। उपस्थिति की पुष्टि रूजो ने 872 में, बालबियानी 1874 में दिया। इन्हें गुणसूत्रों का नाम दिया। बाद में पता चला कि इन्हें गुणसूत्रों का नाम दिया गया। बाद में पता चला कि गुणसूत्र वाल्डे ने इन्हें गुणसूत्रों का नाम दिया। इन कोशिकाओं में निश्चित माप, आकृति एवं रचना, गुणसूत्रों के निश्चित माप, इन्हें कैरियोटाइप कहते हैं। इस समूह को जिसमें गुणसूत्र जोड़ी में लगे होते हैं ट्रिपलेट गुणसूत्र होते हैं जो नियर अबाउट 23 होते हैं। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम लिंक गुणसूत्र कहते हैं। ये होमोलोगस होते हैं और जो सेक्स रिप्रोडक्शन करते हैं दे आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट्स और स्पर्म के द्वारा पिता के संतान गैमेट्स के द्वारा जायगोट में पहुँचती है। बावेरी ने एवं सटन ने 1900 में पता लगाया कि गुण युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को निषेचन भी या नवजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों के प्रकार होता है। जैसे मेंडल ने अपने सफल आनुवंशिक कारकों के द्वारा वैज्ञानिकों की परिकल्पना गुणसूत्र की मेंडल के अनुसार दर्शाई और गुणसूत्रों का अध्ययन किया। जैसा कि चित्र 5.9 में आप देख रहे हैं, G3 गुणसूत्र 2 टाइप के हैं, G2 बाइवेलेंट है। मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। मियोसिस सेकंड में एनाफेज में गुणसूत्र अलग अलग हो गए हैं और जर्म सेल में गुणसूत्र एक दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। बस भाई, बस।